हेलो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 6, बिहेवियरल मॉडलिंग। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 35 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 6 लेक्चर्स है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये जो 35 प्लस एमसीक्यू है, ये जो है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई हाई लेवल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। तो इसके ऑप्शन ए क्लासेस, ऑप्शन बी एक्टिविटीज, ऑप्शन सी यूज केसेस एंड ऑप्शन डी कंपोनेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूज केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following shape connects the initiating actor to the use case। तो इसके ऑप्शन ए एरो, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी अर्क, ऑप्शन डी स्क्रिबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एरो। एरो इज द शेप कनेक्ट्स initiating actor to the use case। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज केस कैनेरियो इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ which of the followings। तो इसके ऑप्शन ए रिलेशनशिप्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी क्लासेस एंड ऑप्शन डी एक्शंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक्शंस। यूज केस कैनेरियो इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज केस आर रिप्रेजेंटेड एज which of the following shape within the system rectangle। तो इसके ऑप्शन ए इलिप्स, ऑप्शन बी सर्कल्स, ऑप्शन सी रैम्बोस एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलिप्स। बाय यूजिंग इलिप्स यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द सिस्टम रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज मॉडल्ड यूजिंग डैश। तो इसके ऑप्शन ए क्लास डायग्राम, ऑप्शन बी एक्टिविटी डायग्राम, ऑप्शन सी यूज केस डायग्राम एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन डायग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्टिविटी डायग्राम। द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इज मॉडल्ड बाय यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू मॉडल बिजनेस वर्कफ्लो। तो इसके ऑप्शन ए डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ऑप्शन बी एक्टिविटी डायग्राम, ऑप्शन सी यूज केस डायग्राम एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन डायग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम इज यूज्ड टू मॉडल बिजनेस वर्कफ्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश कैप्चर्स द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो इसके ऑप्शन ए यूज केस, ऑप्शन बी कंपोनेंट, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी इंटरफेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूज केस। यूज केस कैप्चर द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर्स आर कनेक्टेड टू यूज केस ओनली बाय डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए एसोसिएशन रिलेशनशिप, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, ऑप्शन सी रियलाइजेशन रिलेशनशिप एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। एक्टर्स आर कनेक्टेड टू द यूज केसेस ओनली बाय जनरलाइजेशन रिलेशनशिप्स, क्योंकि वन एक्टर से जो है मेनी यूज केसेस जनरेट होते हैं, इसलिए जो रिलेशनशिप है उसे जनरलाइज रिलेशनशिप कहा जाता है। यानी जनरलाइज रिलेशनशिप में जो एरो है उसकी डायरेक्शन जो होती है यूज केस की तरफ होती है, यानी वो एक्टर से निकलकर यूज केस की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश रिप्रेजेंट्स अ रोल दैट प्लेज विद इन अ सिस्टम। तो इसके ऑप्शन ए यूज केस, ऑप्शन बी कंपोनेंट, ऑप्शन सी एक्टर एंड ऑप्शन डी एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्टर। एक्टर रिप्रेजेंट्स अ रोल दैट प्लेज विद इन अ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the behavior of the use case is specified by dash dash। तो इसके ऑप्शन ए फ्लो ऑफ इवेंट, ऑप्शन बी क्लासेस, ऑप्शन सी कंपोनेंट्स एंड ऑप्शन डी नोड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लो ऑफ इवेंट्स। The behavior of the use case is specified by
flow of events. Next question है dash dash uses the services of the system under the design to fulfill the goals. इसके ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टर, ऑप्शन बी सपोर्टिंग एक्टर, ऑप्शन सी ऑफ स्टेज एक्टर एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी एक्टर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टर. प्राइमरी एक्टर uses the services of the system under design to fulfill the goal. Next question है dash dash states what must always be true beginning a scenario in the use case. तो इसके ऑप्शन ए प्री कंडीशन, ऑप्शन बी प्राइमरी कंडीशन, ऑप्शन सी पोस्ट कंडीशंस एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी कंडीशंस. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्री कंडीशंस. प्री कंडीशन स्टेट्स व्हाट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू beginning a scenario in the use case. Next question है which of the following diagram view the whole system as a block box. तो इसके ऑप्शन ए क्लास डायग्राम, ऑप्शन बी एक्टिविटी डायग्राम, ऑप्शन सी यूज केस डायग्राम एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन डायग्राम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूज केस डायग्राम. यूज केस डायग्राम व्यू द होल सिस्टम एज अ ब्लॉक बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not present in an activity diagram. इसके ऑप्शन ए एक्शन स्टेट्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी इवेंट्स एंड ऑप्शन डी नोट्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इवेंट्स. इवेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्टिविटी डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी डायग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम. इसके ऑप्शन ए यूज केस डायग्राम, ऑप्शन बी स्टेट चार्ट डायग्राम, ऑप्शन सी इंटरेक्शन डायग्राम एंड ऑप्शन डी कंपोनेंट डायग्राम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट चार्ट डायग्राम. एक्टिविटी डायग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ state chart diagram. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है dash dash is the path from one activity state to the next activity state. तो इसके ऑप्शन ए एक्शन स्टेट, ऑप्शन बी एक्टिविटी स्टेट, ऑप्शन सी ट्रांजिशंस एंड ऑप्शन डी फोर्क. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रांजिशन. Transition is the path from one activity state to the next activity state. Next question है object placed in an activity diagram are connected to the activity or transitions using dash dash relationship. तो इसके ऑप्शन ए association, ऑप्शन बी generalization, ऑप्शन सी dependency एंड ऑप्शन डी realization. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए association relationship. Object placed in the activity diagram are connected to the activity or transition by using association relationship. Next question है dash dash is used to represent concurrent flow of an activity diagram. तो इसके ऑप्शन ए solid bar, ऑप्शन बी synchronization bar, ऑप्शन सी swim lane एंड ऑप्शन डी branches. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी synchronization bar. Synchronization bar is used to represent concurrent flow in an activity diagram. Next question है in an activity diagram organizing the activities into groups is called dash dash. तो इसके ऑप्शन ए solid bar, ऑप्शन बी synchronization bar, ऑप्शन सी swim lane एंड ऑप्शन डी branch. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी swim lane. In activity diagram, organizing the activities into group is called swim lane. Next question है dash dash are used to model the dynamic aspects of the collaborations. तो इसके ऑप्शन ए sequence diagram, ऑप्शन बी structural, ऑप्शन सी interaction एंड ऑप्शन डी messages. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी interaction. Interaction are used to model the dynamics aspects of the collaboration. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन डायग्राम आर ऑफ डैश डैश टाइप्स. तो इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2. इंटरेक्शन डायग्राम्स आर ऑफ 2 टाइप्स. दीज आर सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ द मैसेज इज emphasized by dash dash diagram.
इसके ऑप्शन है स्टेट चार्ट, ऑप्शन बी सीक्वेंस, ऑप्शन सी एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी कोलैबोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ मैसेज इज एम्फसाइज्ड बाय सीक्वेंस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash specifies the path to send and receive the messages between two objects। इसके ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी सीक्वेंसिंग, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी रोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिंक। लिंक स्पेसिफाइज द पाथ टू सेंड एंड रिसीव मैसेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सीक्वेंस डायग्राम। तो इसके ऑप्शन ए अ डायग्राम दैट शोज interacting individuals along the top of the diagram and messages passed among them arranged in temporal order down the page. Option B, a diagram that shows messages superimposed on a diagram depicting collaborating individuals and the links among them. Option C, a diagram that shows the change in an individual state over time and option D all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए a diagram that shows interacting individuals along the top of the diagram and messages passed among them arranged in a temporal order down the page। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइफलाइन। तो इसके ऑप्शन ए इट इज अ फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगल विथ pentagon in its upper left hand corner। Option B, it is a rectangle containing an identifier with a dashed line extending below the rectangle। Option C, it is a name compartment, the interaction is represented inside the rectangle and option D none of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी it is a rectangle containing an identifier with a dashed line extending below the rectangle। Next question है what does the message means। तो इसके ऑप्शन ए it passes all communication from one object to another and are represented by message arrow in a sequence diagram। Option B, the message goes from the sending object's lifeline to the receiving object's lifeline। Option C, it is a rectangle containing an identifier with dashed line extending below the rectangle and option D all of the mentioned। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए it passes all communication from one object to another and are represented by message arrow in a sequence diagrams। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज एरोज। इसके ऑप्शन ए सिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस विथ इंस्टेंस क्रिएशन। ऑप्शन बी सेल्फ मल्टीप्लाइड इंस्टेंस जनरेटर। ऑप्शन सी सिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस, सिंक्रोनियस विथ इंस्टेंस क्रिएशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंक्रोनियस, asynchronous, synchronous with instance creation। These are the three types of message arrow। Next question है which of these are true with respect to message arrow। इसके ऑप्शन ए the synchronous message arrow is used when the sending individual continuous execution after sending the message। Option B, the asynchronous message arrow is used when sending individual suspend execution after sending the message। Option C, the dashed arrow is used either to show the return of control from synchronous message or to create new entity and option D all of the mentioned। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी the dashed arrow is used either to show return of control from synchronous message or to create new entity। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस डायग्राम इज अ डैश डैश ओरिएंटेड। इसके ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइम। सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइम ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहेवियर डायग्राम्स इंक्लूड डैश। तो इसके ऑप्शन ए यूज केस डायग्राम्स, ऑप्शन बी स्टेट डायग्राम्स, ऑप्शन सी एक्टिविटी डायग्राम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बिहेवियर डायग्राम्स इंक्लूड यूज केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन मॉडल द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। इसके ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी यूज केस, ऑप्शन सी स्टेट मशीन एंड ऑप्शन डी एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेट मशीन। स्टेट मशीन डायग्राम को स्टेट चार्ट डायग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash is a condition during the life of an object during which it satisfies, performs some activity or wait for some event। तो इसके ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी एक्टर एंड ऑप्शन डी कंपोनेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट। A state is a condition during the life of an object which it satisfies, perform some activity or wait for some event। Next question है the relationship between two states is called dash। तो इसके ऑप्शन ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी जनरलाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रांजिशन। द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर नीडेड डैश। तो इसके ऑप्शन ए व्हेन अ क्लास हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्केनेरियो इज टू बी ट्रेस्ड, ऑप्शन सी टू allocate classes and object to modules एंड ऑप्शन डी टू allocate process to processor। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हेन क्लास हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर नीडेड व्हेन अ क्लास हैज कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है a dash is a state that is nested inside the another one। तो इसके ऑप्शन ए इनिशियल स्टेट, ऑप्शन बी फाइनल स्टेट, ऑप्शन सी हिस्ट्री स्टेट एंड ऑप्शन डी सब स्टेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सब स्टेट। A substate is a state that is nested inside another one। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।